हेलो गाइस, वेलकम टू द कृष्णा कुमोत्सव। कृष्णा कुमोत्सव में आप सबका स्वागत है। हम कर रहे थे MCQ फॉर AP कॉमर्स। तो नेक्स्ट पार्ट का पहला क्वेश्चन है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट HRM इज ए पार्ट ऑफ द ब्रॉड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सिस्टम एज देयर फोकस टू सिलेक्शन, इंडक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ऑपरेशनल एंड ऑर्गेनाइजेशनल ऑप्शंस। थर्ड ऑप्शन है ए एंड बी अबव, डी है नन ऑफ द अबव। तो आंसर होगा ए एंड बी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परफॉर्मेंस अप्रेजल इज ए डबल एज्ड टूल टू क्रिएट स्पेस फॉर द एम्प्लॉय टू ऑर्गेनाइजेशनली सर्वाइव, बी ऑफरिंग चैलेंजेस फॉर प्रमोशंस, सी अकम्पनिंग द कोर्स ऑफ डिमोशंस, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। 13 क्वेश्चन है, वेज डिटर्मिनेशन इज मोस्टली डन थ्रू टूल्स विच आर ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ देज। तो इसका आंसर होगा बोथ ए एंड बी। फिर है, द स्टेप इन्वॉल्व इन डिटरमाइनिंग वेज रेट्स इन्वॉल्व्स परफॉर्मिंग जॉब एनालिसिस, वेज सर्वे, analysis of relevant organizational problems, forming wage structure, framing rules of wage administrations, explaining these to employees, assigning goals and price to each job, grades and price to each job, and paying the granted wages। तो ये इसके वेजेस के स्टेप्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉब इवैल्यूएशंस क्राइटेरियन कम्स फ्रॉम जॉब मैनुअल, जॉब डिस्क्रिप्शंस, जॉब स्पेसिफिकेशन, जॉब ड्यूरेशंस। तो इसका आंसर होगा जॉब स्पेसिफिकेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जिट पॉलिसी प्राइमरली एम्फासाइजेस इन द ब्रॉड सेंसेस फॉर पॉलिसी मेक्स अस retrying people and rehabilitating them। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। द गोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न IRR इज डिटरमाइंड वेयर द नेट प्रेजेंट वैल्यू इज 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टैक्स सेल्ड वुड रिजल्ट इन इंक्रीज इन टैक्स लाइबिलिटी, इंक्रीज इन EPS, डिक्रीज इन EPS, डिक्रीज इन टैक्स लाइबिलिटी कोड्स। तो इसका आंसर होगा इंक्रीज इन EPS और डिक्रीज इन टैक्स लाइबिलिटी। मुझे इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है, तो आप ये क्वेश्चन चेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेन मेथड ऑफ इशूज ऑफ स्टॉक, पब्लिक इशू थ्रू प्रोस्पेक्टस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेन मेथड ऑफ इशू ऑफ स्टॉक्स, पब्लिक इशू थ्रू प्रोस्पेक्टस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल CAPM establishes the relationship between risk and the required rate of return। The capital asset pricing model establishes the relationship between risk and the required return. Next question है, marketing is a human activity directed at satisfying needs and wants through exchange process is the statement of Philip Kotler। Promotion mix includes advertising, publicity, personal selling and sales promotion।
Which of the following is not the stage of PLC product life cycle? Introductions, growth, मार्केट सेगमेंटेशंस, डेक्लाइन. तो इसका आंसर होगा मार्केट सेगमेंटेशंस. A view that the dividend policy of a firm has a bearing on share valuations advocated by James E. Walter is based on which one of the following assumption? Retained earning is only source of financing. Match the following: matching approach, financing working capital, structural ratio, capital structure, ordering quantity, inventory management, bonus share, डिविडेंड पॉलिसी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, असेसन दिया हुआ है हमारे पास. ऑपरेटिंग स्टाइल ऑफ द इंटरनेशनल बिजनेस कैन बी स्प्रेड टू द एंटायर ग्लोब. रीजन है द स्टाइल इज लिमिटेड टू द इंटरनल इकोनॉमी ओनली. ए is true to B is false. नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी कंपेरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी वाज गिवन बाय डेविड रिकार्डो. कंपेरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी वाज गिवन बाय डेविड रिकार्डो. नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी कंपनी ग्लोबलाइज देयर ऑपरेशंस थ्रू डिफरेंट मीन्स. एक्सपोर्टिंग डायरेक्टली, लाइसेंसिंग, फ्रेंचाइजिंग, जॉइंट वेंचर्स, ऑल दी अबव. तो इसका आंसर होगा ऑल दी अबव. दी कंपोनेंट ऑफ WTO आर मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, डायरेक्टर जनरल, ऑल ऑफ दी अबव. तो इसका आंसर भी होगा ऑल ऑफ दी अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया इज़ नॉट एसोसिएटेड विद सार्क, नाफ्टा, ब्रिक्स एंड नन. तो इसका आंसर होगा नाफ्टा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू स्टेटमेंट. द बैलेंस ऑफ पेमेंट डील्स विद बोथ विजिबल एंड इनविजिबल आइटम्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है, STRs आर पॉपुलरली नोन एज पेपर गोल्ड. STRs are popularly known as paper gold. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज़ नॉट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस. IMF, IDA, IBRD, TRAI. तो इसमें इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन कौन सा नहीं है? TRAI. नेक्स्ट क्वेश्चन है, असेसन दिया हुआ है हमारे पास. इडेंट मे बी ओपन और क्लोज्ड. Open ident does not specify the price and other details of the goods. The closed ident specifies the brand, price, number, packaging, shipping mode, insurance. रीजन दिया हुआ है, दिस इज रिक्वायर्ड एज ए पार्ट ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीजर्स. तो यहाँ क्या है? A is true, R is false. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू. हमारे पास स्टेटमेंट दी हुई है, इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटेट्स मार्केट इंटेलिजेंस. STC इज द ये क्वेश्चन आप चेक कर लेना. हमारे पास स्टेटमेंट दी हुई है,
फर्स्ट स्टेटमेंट है इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटेट्स मार्केट इंटेलिजेंस। बी है एसटीसी इज द चीफ एनालिसिस कैनलाइजिंग एजेंट फॉर एक्सपोर्ट एंड रिपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। सी है आईटीपीओ ऑर्गेनाइजेस ट्रेड फेयर्स एंड एग्जीबिशंस। डी है लेटर ऑफ क्रेडिट डज नॉट इंडिकेट दैट द बैंक विल पे द वैल्यू ऑफ imports टू द एक्सपोर्टर। आई थिंक इसका आंसर होगा आईटीपीओ ऑर्गेनाइजेस ट्रेड फेयर्स एंड एग्जीबिशंस। आप चेक कर सकते हो या डी। तो आप इस क्वेश्चन को चेक कर लेना अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। ए selective credit control is related with variations in margin, encourage credit for desirable use, consumer credit regulations. C. Quantitative credit control is related with cash reserve ratio, bank rate is related with rediscounting rate. नेक्स्ट क्वेश्चन है असेसन दिया हुआ है हमारे पास यूज ऑफ पेपर मनी इज रिप्लेस्ड बाय प्लास्टिक मनी द फ्यूचर विल सी द इलेक्ट्रॉनिक मनी क्लियरेंस थ्रू स्टेटलाइट नेटवर्किंग। रीजन है आरबीआई इज इंक्रीजिंग ई बैंकिंग। बोथ ए एंड आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज नॉट फाइनेंस कंपनी। ए हायर परचेज फाइनेंस कंपनी, बी आईआरडीए, सी म्यूचुअल बेनिफिट फाइनेंस कंपनीज, डी लोन कंपनीज। तो इसका आंसर होगा आईआरडीए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया वाज नॉट इंटरेस्टेड विद द फंक्शन ऑफ इन्वेस्टर प्रोटेक्शंस ensuring fair practices by companies, promotion of efficient services by broker. नेक्स्ट ऑप्शन है इम्प्रूविंग द अर्निंग ऑफ इक्विटी होल्डर। तो इसका आंसर होगा इम्प्रूविंग द अर्निंग ऑफ इक्विटी होल्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज ए नॉट नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटी। ऑप्शन ए कॉरपोरेट सिक्योरिटीज, सेकंड है बैंक डिपॉजिट्स, थर्ड है डिपॉजिट विद कंपनीज, फोर्थ पोस्ट ऑफिस सर्टिफिकेट्स एंड डिपॉजिट्स। तो इसका आंसर हो जाएगा कॉरपोरेट सिक्योरिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स मेट अंडर सेक्शंस 155 of the Income Tax Act is applicable on certain companies. For the next question है for the assessment year 2011 and 12 deduction under section 80G is available without any limit but at the rate of 50% on Jawaharlal Nehru Memorial Fund. Next question है interest on capital paid by a firm to its partners under the Income Tax Act 1961 is allowed 12%. Next question है under capital gains head of the Income Tax Act the income from sale of household furniture is exempted income. Next question है under section 80E of the Income Tax Act 1961 deductions in respect of payment of interest on loan taken for higher education shall be allowed up to without any limit. Thanks for watching. Keep like, share and subscribe this channel.